फिर हमने बात की थी कोसाइन रूल के बारे में. कोसाइन रूल से क्या होता है? यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट, राइट? इफ यू हैव द इंक्लूडिंग एंगल and you have two vectors here, you can apply this formula, which is c square is equal to a square plus b square minus 2ab. 2ab का मतलब है ये a और b, और ये c जो है ये इंक्लूडिंग एंगल है. जो c है ये आपके पास इंक्लूडिंग एंगल है. ठीक है? So we saw that c is equal to a square plus b square under root minus 2ab into cosine of c. This is what we discussed. फिर मैंने बताया था कि साइन रूल क्या होता है. ठीक है? और साइन रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑपोजिट साइड्स गिवन है तो यू कैन ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, राइट? दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड. ठीक है? वी आल्सो डिड सम क्वेश्चंस यस्टरडे. इसको हम और भी करेंगे आगे. ठीक है? we'll see those questions, but today I'm going to talk about vector components. I'm going to talk about vector components today. I'm going to talk about vector components and their resolution. For example, I have here, this is very important stuff. For example, I have here the y-axis, and this is the x-axis, and I have here, for example, a vector which is vector r, right? This is a vector that we have, and for example, this angle here is theta. Yeah, I have y-axis, I have x-axis, I have here the angle theta, and this is the vector that we have. Now you know that this vector r has contribution both in x direction and in y direction, right? This vector has a contribution in x direction, we call that or x, right? This vector has a contribution in y direction, we call that or y. ठीक है जी? इसका कंट्रीब्यूशन x डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन में भी है. अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा गौर करें तो इट्स लाइक अ राइट एंगल ट्रायंगल. It's like a right angle triangle. You have something of this sort. You have here or, you have here angle theta. You have here this thing as or x, and this thing as or y, right? ये ry जो है, basically ये भी ry है, तो this is also ry. You see, this is also equal to ry because these are parallel lines. अच्छा, अब if you talk about this component here, that is the horizontal component, what you can do is you can apply the formula cosine theta is equal to adjacent, which is rx, over the hypotenuse, which is r. समझ आ रही है? And this becomes rx is equal to r cosine of theta. So you see that what happens is that this angle is theta, this horizontal component is r cosine theta. जब भी आपके पास इस तरह का वेक्टर आएगा तो एंगल के जो along होगा adjacent में, इस तरह से along जो होगा, that is going to be r cosine of theta, right? Are you getting what I'm saying? अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास, so we call this what we call this this r cosine theta is called the horizontal component of r. We call this the horizontal component of r. Is that clear, Mehdi? अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताएंगे what about this one, this ry? If you see here, this ry is nothing but, you can write here sine theta is equal to opposite over hypotenuse, and this opposite is ry, and this hypotenuse is r. This opposite is ry, this hypotenuse is r. So ry becomes what? This becomes r sine of theta. So here ry is r sine of theta. As you can see here, ये वाला भी उसके equivalent है ry. This is also r sine of theta. And this gives you an important result here, that this ry is the vertical component of r. This ry is the vertical
component of R. Is that clear? अच्छा, उसके बाद आपको एक बात पता होनी चाहिए यहां पे कि जब भी आपको वेक्टर दिया होगा तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और उसका वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है? We'll see that as well. And I'm also going to tell you here that, for example, I have a vector here which is if this angle was theta, and for example this component was fx, this component was fy, right? And you want to find the resultant of f. So what you'll do is, since it appears like a right angle triangle, you see it's like a right angle triangle, तो उसका magnitude क्या होता है? अगर आपके पास ये right angle triangle बनी हो यहाँ पे like this, if this is r and this is rx and if this is ry and this angle is theta, the magnitude is given by the Pythagoras theorem here. Magnitude is given by the Pythagoras theorem here, and the Pythagoras theorem here is giving you is equal to ry whole square plus rx whole square, right? We have here the magnitude of this is equal to r square is equal to ry square plus rx square, or rx square plus ry square. And r becomes what? R becomes square root of ry square plus rx whole square. We are doing vectors. और मैंने इसमें क्या क्या बताया अभी तक? मैंने ये बताया कि आपके पास अगर एक वेक्टर है, उसका एंगल थीटा है, तो आप अगर गौर करें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे r कोसाइन थीटा बता रहा है आपको। वो कैसे बता रहा है? वैसे बता रहा है कि आपके पास ये ट्रायंगल है, इसका अगर आप कोसाइन थीटा लेंगे तो बन जाएगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये r बन जाएगा आपके पास, ये rx बन जाएगा r कोसाइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा r कोसाइन थीटा होता है। इस केस में ये जो एंगल जो आपके पास है, इस एंगल की बात कर रहा हूं, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा इस केस में? r sin थीटा, राइट? ठीक है, this is what I told till now, and then I told you guys that how you can find the magnitude of this. If you assume that this is a right angle triangle because this is ry, this is rx, you can find the magnitude. अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पे ये f cos theta है और ये f sin theta है, how can we prove that this resultant is equal to f? How can we prove that the resultant is equal to f? You can apply the Pythagoras here. You know that resultant whole square is given by f y square plus f x square. ऐसे ही है, अब मैं वो लिखूंगा ना. So this fy is f sin theta whole square, fx is f cos theta whole square. This becomes f square sin square theta plus f square cosine square theta. This is the resultant, right? I can write it as r square, right? So r square is equal to, I'll take f square common, and this is sin square theta plus cosine square theta. There is a mathematical identity which states that sin square theta plus cosine square theta is identical to 1. It's always identical to 1. मतलब ये 1 के equal है. And this becomes here r square is equal to f square. This is 1, and r is equal to f. You take the under root of both sides and you get the answer. This is what you're going to do. Okay, this is the method of finding the resultant, right? Is that clear? अच्छा, अब online students, is that clear to all of you?
अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे एक इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल हो, अगर वेक्टर हो, वेक्टर की आपने डायरेक्शन बतानी हो, जैसे एंगल इज थीटा, ये आपके पास वेक्टर है और आपको पता है कि ये वाला कंपोनेंट था आर वाई, दिस कंपोनेंट वाज आर एक्स, and you want to find the direction of this vector in terms of theta. Theta will give you the direction. So this is also ry, and what you can do is, if for example you do not know, if you do not know r, what you can do is you can find tangent theta is equal to ry over rx, and theta will become what? Tangent inverse ry over rx. This is what you're going to do. ठीक है जी? There is a question from the past papers. There's a question in the past papers in which they have given you something of this sort. You have here a vector. They have given you the vertical component and the horizontal components of that. For example, this ry is 3 kilometers. This angle here is theta. This rx is, for example, 4 kilometers. You have to find the resultant and a direction with the horizontal. Let's say इसका आपने resultant find करना है. You have to find the resultant vector and the direction of the resultant with the horizontal. G. आपने resultant का magnitude find करना है. What you'll do is you will write here r square is equal to rx square plus ry square or ry square plus rx square, and you have here, for example, this is यहाँ पे ये rx यहाँ पे 4 है, 3 square, and you get what? You get 25, and r is going to be 5 kilometers, right? This is how you will find the resultant vector, right? अच्छा, उसके बाद आपने अगर फाइंड करना है इसकी डायरेक्शन, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? This is 3/4 and theta is tangent inverse 3/4, which is 36.9 degrees. This is how you will solve such questions, right? ठीक है, क्लियर है? अच्छा चले, ये चीज तो यहाँ पे आ गई. मैं आपको एक आध क्वेश्चन करवा के एक और चीज बताना चाहूंगा, राइट? लेट्स डू वन क्वेश्चन हियर which is based on that. There you have a particle has a velocity v at an angle theta to the horizontal. ये वेक्टर v है, v दिया हुआ है, vh दिया हुआ है. मैग्नीट्यूड क्या है, एंगल क्या है, मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक? यस शामिर, व्हाट डू यू थिंक? देखिए आप गौर करें यहाँ पे, तो ये आपके पास v है, ये vh है. आप कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, v square is equal to v square plus vh square, and v is equal to square root of v square plus vh square, and you get the answer v. That's all. और एंगल कैसे निकालेंगे थीटा? आपको पता है कि टेंजेंट मैंने अभी बताया, ये यू हैव टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी ओवर vh, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. मैथ्स लिखी हुई है. Tangent inverse VV over VH. So answer is B. ठीक है? This is what you will do. You have been given the इसको vertical component क्या होगा वैसे? कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कैसे इसे? 5 sin of 37. देखिए ना, ये vertical component इसका होगा. Online student समझ आ रही है जी? This component is 5 sin of 37. इसको आप solve करें तो आपका आंसर आएगा 3 kilometers, right? और ये इसका horizontal component होगा 5 sin of 37. Answer is A. So we have here another example. I have a vector here which is vector R, and I have here this angle alpha. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एंगल अल्फा है. ये मेरे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है rx,
और मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है आर वाई। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या इसके कंपोनेंट्स बनेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इन दिस केस? व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of R and vertical component of R? You have to find the horizontal and vertical components of R. ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, आपके पास एंगल वहां चला गया। ठीक है, आप ये वाला एंगल जो है, अगर ये राइट एंगल था, दिस एंगल कैन बी 90 माइनस अल्फा। एक मेथड तो ये, दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज 90 माइनस अल्फा। सो Rx here becomes R cos of 90 minus alpha, and Ry here becomes R sine of 90 minus alpha. But there is a thing here that you should know, that there's a mathematical identity which states that cosine of 90 minus alpha is equal to sine of alpha. ये एक मैथ की आइडेंटिटी है, and sine of 90 minus alpha is equal to cos of alpha. So this R cosine 90 minus alpha becomes R sine of alpha, and this R sine of 90 minus alpha becomes R cosine of alpha. So the horizontal component is R sine of alpha in this case. Rx is equal to R sine of alpha, and this is R cosine of alpha. मैं भी आपको इसको एक और तरीके से भी बताता हूं। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कॉस नहीं होता, यहाँ पे साइन आ गया क्योंकि एंगल आपके पास ये वाला था, और यहाँ पे द वर्टिकल कंपोनेंट इज, as you can see here, it is R cosine of alpha. अब इसको एक और तरीका क्या है करने का, आप लोग इसको अगर गौर करें, एंगल अल्फा है अगर, और ये R है, तो आपको मैंने अभी बताया था कि एंगल के जो बिल्कुल साथ होता है ना, साथ, वो कॉस होता है। मतलब इसके साथ जो लगा हुआ है यहाँ पे, दैट इज कॉस। सो दिस R y here is R cosine of alpha. और एंगल के जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट इन द फ्रंट, that is always sine. I proved that earlier at the top, right? So this is R sine of alpha. So this component here, this is also equal to this. So Rx is also equal to R sine of alpha. ये एक shorter method है, you can always opt for this. Online students, is that clear? A force F acts at an angle theta to the horizontal. What are the horizontal and vertical components of the force? You've been given the horizontal and vertical. You have to, in fact, form that as horizontal and vertical. What is the answer for this? अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो ये तो आपके पास बन जाएगा डायरेक्ट f cos of theta. अच्छा, ये आपके पास बनना चाहिए f sin of theta, लेकिन f cos of theta के सामने कहीं आपको sin theta नजर नहीं आ रहा। तो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि sin of theta is cos of 90 minus theta. ठीक है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये चीज बन जाएगी, दिस इज 90 माइनस थीटा, f cos of 90 माइनस थीटा। उस तरह से भी आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं, जो मैंने आप अभी we did it just right now। ठीक है, so this becomes f of cos of 90 minus theta is the answer. Is that clear? देखिए, ये cos of 90 minus theta नहीं, sin theta है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है ना कोई और। cos थीटा तो है, उसके सामने आपको कहीं, ये देखिए cos थीटा के सामने sin थीटा होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, देखिए है नहीं, तो ये हमने, उसने आपको ट्रिक किया, उसके लिए जरूरी आपको ये पता हो। यू हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, एंड दिस इज द रिजल्टेंट, एंड दिस इज द vertical component, and you have here the horizontal component. This angle is theta. Acha, they have given you the horizontal component as
20 Newton, theta is 30 degrees. They have asked you what is the vertical component. What you will do in this case is that this resultant, you can assume that this is R, right? Now you know that the horizontal component is 20, right? I can write here R cosine of theta is equal to 20. ऐसे ही है. Now I can find the value of R using this. Cosine of 30 आ जाएगा यहाँ पे is equal to 20.0. So R is 20.0 over cosine of 30. Now I have the value of R. I can find the vertical component. That is going to be R sine of theta. R is 23.1 sine of 30. Can you tell me the answer? This is 11.5.